बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 के चैप्टर नंबर 7 प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के चैप्टर MCQs। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट मॉलिक्यूल्स डू नॉट लीव देयर पोजीशन? सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा। करेक्ट आंसर इज सॉलिड। विच ऑफ द सब्सटेंस इज द लाइटेस्ट वन? कॉपर, मर्करी, एल्यूमिनियम, lead. Correct answer is aluminium. SI unit of pressure is Pascal, which is equal to 10 की पावर 4 न्यूटन मीटर पर सेकंड, 1 न्यूटन मीटर पर सेकंड, 10 की पावर 2 न्यूटन मीटर पर सेकंड, 10 की पावर 3 न्यूटन मीटर पर सेकंड. Correct answer is 1 न्यूटन मीटर पर सेकंड. What should be the approximate length of a glass tube to construct a water barometer? 0.5 meter, 1 meter, 2.5 meter, 11 meter. Correct answer is 11 meter. According to Archimedes, upthrust is equal to weight of displaced liquid, volume of displaced liquid, mass of displaced liquid, none of these. Correct answer is weight of displaced liquid. The density of substance can be found with the help of Pascal law, Hooke's law, Archimedes principle, principle of flotation. Correct answer is Archimedes principle. According to Hooke's law, stress multiplied strain is equal to constant. Stress divided by strain is equal to constant. Strain divided by stress is equal to constant. Stress is equal to strain. Correct answer is stress divided by strain is equal to constant. The following force extension graph of a spring are drawn on the same scale. Answer the question given below from the 8 to 10. ये हमारे पास पिक्चर है, इसको देख के हम नेक्स्ट MCQs का बताएंगे कि किसको ओबे कर रहा है और किसको नहीं ओबे कर रहा. विच ग्राफ डज नॉट ओबे हुक लॉ? कौन सा ग्राफ नहीं ओबे कर रहा हुक लॉ को? A, B, C, D. करेक्ट आंसर है C. इसमें देखें C कौन सा है, ये वाला. इसके बाद विच ग्राफ गिव द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट? A, B, C, D. स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सा देगा? A. विच ग्राफ गिव द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट? A, B, C, D. लार्जेस्ट वैल्यू कौन देगा? लार्जेस्ट वैल्यू हमारे पास आएगी D की. D इज द करेक्ट ऑप्शन.